नेक्स्ट में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट यूनिट 3 पे है। यूनिट 3 में आपको एडवांस HTML के बारे में चीज़ें सीखनी है। एडवांस HTML में जैसे चीज़ें क्या होगा, तो लिंक्स कैसे करेंगे हम वेब पेज पे, लिंक्स के बारे में बताया जाएगा। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। सो मैनी टैग्स हैं यूनिट 3। नाउ एक्सप्लेन लिंक्स। अबाउट लिंक्स, लिंक्स क्या होता है बेसिकली? लिंक्स क्या होता है कि जैसे हम कोई भी जैसे वेब पेज आपने देखा है, वेब पेजेस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कोई अनदर पेज ओपन हो जाता है, तो वो चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं HTML के थ्रू भी, ठीक है। HTML में कुछ टैग्स हैं लिंक्स करने का। लिंक्स करने का कैसे हम लिंक्स करते हैं उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और देखिए। पहले लिंक्स क्या है? लिंक, हाइपरलिंक्स का नाम सुना है आपने से? हाइपरलिंक्स या लिंक्स, ये लिंक आर वन of the most important characteristics of web pages links move used from the current page to a destination that is specified in the HTML. HTML page. Okay. URL stand for, पता है आपको क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL just an address that tells the browser precisely where on the internet resources is to be found. बेसिकली हाइपरलिंक्स क्या होता है?
the hyperlinks or your links both are same concept. One of the most important characteristics of web pages, a link moves us from the current page to a destination page. Current page to a destination that is specified in HTML pages. क्या होता है कि करंट पेज से अगर जैसे हमें कोई दूसरी पेज पे जाना होता है या डेस्टिनेशन पेज पे जाना होता है तो उसके लिए हम क्रिएट अ हाइपरलिंक या लिंक्स बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, एंकर टैग के जरिए आती है। अब जैसे यूआरएल क्या होता है, यूआरएल का मैंने बताया आपको, जैसे यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, इसके लिए इसको फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स कह रहे हैं। यूआरएल इज जस्ट एन एड्रेस, किसी भी वेब का पेज का क्या होता है, वो एड्रेस है जो कि that tells the browser precisely where on the internet resource is to be found। तो उस URL का जो एड्रेस है, उसकी जो रिसोर्सेज है, उसको वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम जैसे एंकर टैग के बारे में देखें। एंकर टैग्स क्या होते हैं, व्हाट इज एंकर टैग? HTML में जो हम पेज को लिंक करते हैं यूजिंग एंकर टैग के जरिए करेंगे। What is anchor tags? The anchor tags is used to create links between object like HTML pages, files, websites, etc. It is introduced by a tag and terminated by this tag. href is the most common attributes of the anchor. Anchor tags. बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही हम वेब पेज बनाना चाहते हैं, वेब पेज में हम लिंक्स करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं। एंकर टैग्स के लिए हम क्या मेंशन करते हैं, तो इसके लिए जैसे बेसिकली एक टैग यूज़ करेंगे हम ए, और ए के साथ क्या होता है, href यूज़ होता है, मोस्ट कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंकर टैग्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्पीड टैग्स का यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले इसे टैग लिखेंगे ए href इज इक्वल टू URL जो इसके रिसोर्सेज हैं, देन यू टैग ए टैग क्लोज, then anchor tag close. This is a anchor tag. And now this is define a hyperlink reference.
नेक्स्ट हमारा जो होता है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट इसके एग्जांपल हम समझेंगे। ठीक है, एंकर्स लिंक्स का जो यूज करना, हम एक एग्जांपल की थ्रू से इसको समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में आप देखेंगे जिसे में हाइपरलिंक यूज कर रहे हैं। यूजिंग अंडरलाइन टैग और यूजिंग गो टू। जब गो टू पे हम क्लिक करें तो क्या हो, इग्नू के पेज, इग्नू का जो पेजेस है वो ओपन होके आ जाए। इग्नू की वेबसाइट वाली सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपका पेजेस का है वो शो होने लगे। पिक्चर्स आ जाए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाए, एडमिशन आ जाए, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इग्नू वेबसाइट। इसके लिए कैसे हम टैग को हम लिखेंगे, इसको हम पहले यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करें HTML हेड, टाइटल एग्जांपल 7, टाइटल टैग क्लोज, नो बॉडी, so next is bold, underline, hyperlink, U tag close and V tag close. Now next is you click on go to, then open a destination page. Destination page इग्नू वेबसाइट्स। कैसे करेंगे कि हम क्लिक जब करें, हाइपरलिंक बनाए कैसा कि अगर हम क्लिक करें गो टू पेज तो वो क्या आ जाए, हमारा इग्नू की पेज ओपन होके आ जाए। इसमें सारे इग्नू की इंफॉर्मेशन हो, जैसे इसमें जो जैसे वेबसाइट्स में इंफॉर्मेशन होता है, एडमिशन जोन होते हैं, स्टूडेंट जोन्स होते हैं, तो सारी चीज़ें आ जाए। तो वो चीज़ें हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा BR टैग यूज कर लिया यहाँ पे हमने। 2 बार अगर BR दे दिए तो 2 टाइम्स हमारा न्यू लाइन्स क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कंटेंट हमारे क्या है, गो टू हाइपरलिंक का क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि उसमें अंडरलाइन खुद आ जाता है, और जैसे ही अगर इस पर आप कर्सर आप माउस ओवर करेंगे ये क्या होगा, यहाँ पे हैंडलाइन स्ट्रक्चर्स आने लगते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, सीधा रिफरेंसिंग क्या करता है, ये हाइपरलिंक रिफरेंसिंग। तो गो टू टैग अभी हमने आपको बताया आपको क्या होता है, href इज इक्वल टू URL में हम क्या लेना चाहें, इग्नू की वेबसाइट का लिंक आपको पता है कि क्या होता है, जैसे http /2 times www.ignou.ac.in, then inverted comma क्लोज करेंगे आप। ठीक है,
यहाँ पे कंटेंट क्या हुआ हमारा, गो टू इग्नोर लिखा हुआ है। देन इग्नोर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट क्या है हमारा, IGNOU इग्नोर। देन ये टैग गो टू किस पेज पे हो, इग्नू की वेबसाइट पे जाना है, तो गो टू दैट मींस क्या होगा, इग्नू पे क्लिक करें, हैपन लिंक किस पे हो रहा है, इग्नू पे हो रहा है, इग्नू पे क्लिक करें तो क्या इन्फॉर्मेशन हमारा आ जाए, हैंडलाइन स्ट्रक्चर्स कहाँ बनेगा हमारा, क्या बनेगा, इग्नू पे बनेगा, और ये इन्फॉर्मेशन हमारा जो आएगा कुछ इस तरह के पेजेस आ जाएंगे आपके, क्लिक ऑन इग्नू। इसके लिए टैग हमने क्या यूज किया, हमने एक्सप्लेन किया, एक एंकर पॉइंट एंकर टैग दिया, href, और जिस वेबसाइट से हमें लिंक करना उसकी क्या दिया हमने, URL दिया, एंकर पॉइंट लिखा, एंकर टैग क्लोज कर लिया, फाइनली क्या करेंगे, बॉडी टैग क्लोज करेंगे, देन HTML। नेक्स्ट हम HTML में लिस्टिंग टैग के बारे में जानेंगे। लिस्टिंग टैग क्या होता है कि लिस्टिंग टैग जैसे बहुत सारे डिफरेंट लिस्टिंग टैग्स हैं, जैसे ऑर्डर लिस्ट टैग होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, डेफिनेशन लिस्ट टैग्स होते हैं, ये सारे क्या किस कैटेगरी में रहते हैं, लिस्ट की कैटेगरी में रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट lists are used when the data are to be mentioned in the form of points like causes of particular issues, list of items etc. List are divided into three types. First of all, order list, and second type is unordered list, and third types of definition list. There are three types of listings. Its names is order list, unordered list, and definition list.
में क्या होता है, चीज़ें को हम जैसे कि ऑर्डरली डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली लिस्ट क्या है, चलो लिस्ट समझते हैं कि लिस्ट आर यूज्ड व्हेन द डेटा आर टू बी मेंशन इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स लाइक कॉजेज और पर्टिकुलर इशू लिस्ट ऑफ आइटम्स। क्या होता है कि जैसे लिस्टिंग हम प्रिपेयर करते हैं, किसी चीज़ की भी हमें लिस्ट बनाना हो, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारा क्या है, फोर्थ में क्या है, जैसे बुक्स है, नोटबुक्स हैं, पेन है, मार्कर है, ये सारी चीज़ें तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, लिस्टिंग को। बेसिकली ये लिस्ट में भी 3 टाइप्स बताया, तो कौन सी लिस्ट है, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा को अरेंज लिस्ट वाइज करता है, नंबर्स में करता है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर लिस्ट कहेंगे। और जो चीज़ें हमारा ऑर्डर में डिस्प्ले नहीं करें, नंबर्स में ना करें, जैसे ऐसे कुछ डिस्प्ले करें, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, मार्कर, ठीक है, इनको हम क्या करें, दिस इज लिस्ट की किस कैटेगरी में रखा गया है, अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को हम समझते हैं। डेफिनेशन लिस्ट जैसे डेफिनेशन लिस्ट को हम कैसे समझेंगे, बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, कोई भी हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे मान लें हम HTML हमने लिखा, HTML क्या है, जैसे HTML हेडिंग क्या है हमारा, HTML। अब हेडिंग्स को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि it is a markup language। It is a markup language। HTML को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए बेसिकली क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आएगा। इसके डेफिनेशन को हम डिफाइन करें, ये हमारा डेफिनेशन टर्म होता है, ये क्या होता है, डेटा डेफिनेशन होता है, और इसके ऊपर जो हम डिफाइन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं। अब जैसे डेटा टर्म हमारा क्या है, HTML, और डेटा टर्म को हम डिफाइन किस में कर रहे हैं, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, दैट्स अ, इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन। इसको भी हम लिस्टिंग की कैटेगरी में लिखेंगे और इसमें कहेंगे हम डेफिनेशन लिस्ट। नेक्स्ट हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, कैसे टैग अप्लाई करेंगे हम अनऑर्डर। व्हाट इज अनऑर्डर लिस्ट? Sometimes these lists are also called bullet list. These lists are characterized by items that do not have numbers. Okay. तो ऑर्डर लिस्ट को हम क्या करते हैं,
कि अनऑर्डर लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज बुलेट लिस्ट। These lists are characterized by items do not have numbers। इसका सबसे कैरेक्टराइज क्या है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें क्या होता है, नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होगा, हमारा बुलेट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमें इसको हम क्लियर कर देना, आपको एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल नंबर 8, आइटम्स लिस्ट। आइटम लिस्ट में जैसे हमारे पास क्या है, बुलेट्स में हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल क्या है, बुक, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मार्कर। हमें लिस्टिंग में कुछ इस तरह से आउटपुट चाहिए हमें। इसके लिए हम क्या कोड करते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, और देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाना है। तो सबसे पहले HTML टैग लिखेंगे, हेड टैग लिखेंगे, और क्या होता है, टाइटल टैग होता है। टाइटल के अंदर हम एग्जाम्पल 8 मेंशन कर रहे हैं, टाइटल टैग क्लोज, एक हेड टैग क्लोज, नो बोल्ड विद अंडरलाइन, आइटम्स लिस्ट, U टैग क्लोज, P टैग क्लोज, BR। अब हमें क्या चाहिए, आप इस चीज़ को गौर से देखें यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा, इसको हम क्या करते हैं, सर्कल बोलते हैं। सर्कल लिस्ट में आए, कौन से लिस्टिंग में है, और इसको किस ऑर्डर में हम बोल रहे हैं, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। तो ठीक है, जो हमारा लिस्टिंग है वो अनऑर्डर लिस्टिंग में है। इसके लिए हम सबसे पहले टैग क्या मेंशन करेंगे, तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या टैग यूज करेंगे, ड्यूअल टैग यूज करेंगे। ओके, और अगर आपको जैसे इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे सर्कल की जगह पे आपको स्क्वायर लेना है, या डिस्क। डिस्क क्या होता है, सॉलिड में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिस्क आता है, और ये क्या है, हमारा स्क्वायर है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, सर्कल कर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ड्यूअल टाइप इज इक्वल टू किस फॉर्मेट में चाहिए, तो सर्कल में चाहिए, तो यहाँ पे हमें सर्कल लिखना है। देन यूएल के अंदर हमें कंटेंट लिखने के लिए हम टैग का यूज करेंगे ए लाइन, नॉट L1, ए लाइन। ए लाइन क्या करता है, ऑटोमेट ब्रेक करता है, मतलब ऑटोमेट क्या होता है, वो न्यू लाइन पे लेता है, BR की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ए लाइन, देन कंटेंट हमारा क्या है वो, देन ए लाइन टैग क्लोज्ड, देन अगेन ए लाइन, notebook, then li tab closed. Now next is li, again content is pen, then li tab closed, then li pencils, then li tab closed. Now li again for markers, then li tab closed. Now finally closed your tab.
then body tag closed, then HTML tag closed. Now discuss about order list. What is order list? List having numbered items are known as order list. They are used when the items in the list have unnatural numbers. यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि जैसे हम ऑर्डर लिस्ट को क्या कर रहे हैं, जो आइटम्स लिस्ट है हमारा वो नंबर्स में शो करे, इसको क्या करते हैं ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, जिसको हम नंबर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल थोड़ी समझ रहे हैं। इसको भी एग्जाम्पल नंबर 9, list of courses BA, BCA, PGDCA, ADCA और MC। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हमारा डेटा नंबर लिस्ट के थ्रू अरेंज किए जा रहे हैं, उसको ऑर्डर लिस्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे 3 फॉर्मेट हो सकते हैं, रोमन नंबर्स भी आप शो कर सकते हैं, स्मॉल नंबर रोमन नंबर्स, और दूसरा क्या हो गया कैपिटल रोमन नंबर्स में से 1, इस तरह से कर सकते हैं। ये अलग अलग सीक्वेंस है, लेकिन डिफ़ॉल्ट में जो हमारा जो देगा वो क्या होगा, रोमन नंबर्स में दे रहा है हमारा 1 2 3 4 5, जिसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हम इसके लिए ऑर्डर लिस्ट के लिए हम टैग यूज करेंगे OL। स्टार्ट कर रहे हैं HTML एड टाइटल एग्जाम्पल 9, टाइटल टैग क्लोज, then head tag close, old tag, new tag, list of courses, then U tag close, then V tag close, then new line, 2 times VR and VR. The next is order list dimension of OL tag, then LI tag for listing, then content TA, then LI tag closed, then BCA as it is. ADCA, then LI tag closed. After that LI
then FCA. After that close, then OL tag. Okay. After that close, OL tag. Then body closed. Then HTML tag. अगर आपको जैसे रोमन नंबर्स में अगर जैसे आपको चाहिए इस फॉर्मेट में चाहिए, इसके लिए यहाँ पे थोड़े से कोड चेंजेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ओएल टाइप इज इक्वल टू मेंशन करेंगे आप इज इक्वल टू कैपिटल रोमन नंबर्स के लिए बाकी ऐसा. Now next discuss definition list. Another type of list is a definition list. Definition list have a heading and text. Okay, definition list have a headings. Definition list को हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. नेक्स्ट एग्जाम्पल 10. For example, HTML underline HTML is a markup language. Okay. तो ध्यान से देखिए हमारे क्या है कि जैसे यहाँ पे हम डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर रहे हैं. डेफिनेशन लिस्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? डेटा टर्म बोलते हैं, डीटी बोलेंगे. और इस टर्म को हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं तो डीडी बोलेंगे, डेटा डेफिनेशन. और इससे पहले हमारा क्या यूज़ हो रहा है? तो डेटा डीएल टैग यूज हो रहा है, डेटा लिस्ट. ठीक है, तो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं. नेक्स्ट HTML हेड बॉडी टाइटल. एग्जाम्पल 10. टाइटल टैग क्लोज्ड and head tag closed, then body tag, then data list tag DL, or DP tag with U. Content should write HTML. U tag, DP tag closed. Now data definition HTML is a markup language. Then data definition tag closed. After that DL tag closed. Then body tag closed. Then HTML tag closed. ठीक है. तो डेफिनेशन लिस्ट का क्या होता है कि डेफिनेशन लिस्ट में हम दो टैग और ऐड कर दिए हमने, डीबी और डीटी, डेटा डेफिनेशन.